गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाउ आर यू? You are here Sunday morning 8 a.m. Good. No, we are yet to begin, Sunil. You have not missed anything. करें चालू, बाकी लोग आते रहेंगे जब उनको आना है. Yesterday we saw place values and our basic number system and PYQs based on those. Any issue in that? Units place, tens place, hundreds place, and after decimal point, 1 by tens place, 1 by hundreds place, 1 by thousands place, and so on. Right? And whatever number we have, something like XYZ, then we represent it as 100x plus 10y plus z, etc. Right? And questions were something like, we have a number, we reverse it, and then there is one another condition. We take a number xy, we write it as 10x plus y. बस वही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इस क्वेश्चन में. उतना ही दिया है कि there is a number, 2-digit number. That is all that is given. We start with xy, and whenever we have to assume something like xy, yz, and we have to reverse it, so we instinctively go towards place values to look for answers. Fine. Then we solve the PYQs based on that. Now today we'll start with mathematical operations. That is, starting, we are doing addition, subtraction, multiplication and division. Something which we have learned in our school days for sure. यही से start होता है सब कुछ. First we learn about numbers and number system, and then we learn how to operate on them. So what is a mathematical operation? It is kind of a function which takes input and gives you output. It takes two values as input and gives you one value of output. Meaning, if operation is addition, so we take two numbers as input, let us say 2 and 3, and gives you output as 5. This plus is a mathematical operation or a function. It takes some input values and gives you output value. And we represent this function by this symbol, addition symbol, plus. And same is the case with subtraction. Same is the case with subtraction, multiplication, division. Okay. What is important is for us to revise what are the basic properties of addition. Okay, questions would be based on that only. Whenever we are adding two numbers on a number line, what we are doing, we have something like this. We have a number line. Here there is 0, here there is 1, 2, 3 and so on. Here we have -1, -2 and so on both the sides. So when we are adding, what we are doing, let us say we are starting from 1. So we are adding 2 to 1. Then we are going two places to the right or to the left from my vantage point, to the right from your vantage point. So when we are adding, we are going on this side. And wherever we are starting, if we are starting from -5 and we have to add 2, still we are going to this side, -4, -3. Whenever we are adding, we are going on the left side, and whenever we are subtracting, we are going that side, right? And we know that any number on this side is greater than any number of that side. That we know. That is the basic of addition on number line. Whenever we are adding, we are going on this right side or positive side on the number line. Then what are the other properties? That some of properties we saw. Addition of odd number and odd number. Odd plus odd is even. Then even plus even, even. Then odd plus even, odd. We know these properties.
whenever you are confused about कि कौन से प्रॉपर्टी से क्या आता है, just put the values and get what is the output. अगर ये याद नहीं आ रहा कि ऑड प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस इवन इवन होता है कि ऑड होता है, टेक वन ऑड नंबर, टेक वन इवन नंबर एंड सी. एक देख लो, टू ले लो, 3 ले लो, आउटपुट आ रहा है 5 तो ऑड होगा. बिकॉज दीज आर जनरल रूल्स, ट्रू फॉर ऑल इवन एंड ऑड नंबर. तो कोई भी लेके देख सकते हो, चेक कर सकते. फाइन. An addition of two natural numbers. Will it be a natural number? What are natural numbers? 1, 2, 3, 4. The way we count naturally. So natural number plus natural number. Will it always be a natural number? Yes. Whenever we are at any natural number and we are adding natural number to it. Natural number is nothing but a positive integer. That also we saw in the last class. So we are anyway going on that side only. So it will be a natural number. Whole number plus whole number. Would it be a whole number? Addition of two whole numbers. Would it be a whole number? What are whole numbers? 0, 1, 2, 3, 4. Just 0 add ho jayega natural number. Addition of two integers. Will it be integer? Huh? Yes, no? Addition of two integers. Will it be integer? Right. We are at any integer and we are jumping from one of those points to either on this side or on that side. If you are adding on this side, if you are subtracting on that side. But it will always be on integer. We will always land on these distinct places which are integers. So addition of two integers will always be an integer. Fine. Next, addition is associative and commutative. These are typical words that we used to use in our earlier classes, I mean school days as well. But what do they mean? We might have forgotten. Whenever we say addition is commutative, what we mean is order in which we add two numbers does not matter. You know this. This is just a fancy way of saying the same thing. Order of addition does not matter. 1 plus 2 plus 3 is equal to 2 plus 3 plus 1 is equal to 2 plus 1 plus 3. किसी भी order में add करो, it doesn't matter. That is what we want to say when we say addition is commutative. And what do we mean by addition is associative? It means पहले कौन सा करो उससे फर्क नहीं पड़ता. 1a plus b plus c is equal to a plus b plus c. ये होता है associative. Addition is commutative and associative. Okay. Basic properties है. We are just going through them once. चलिए आगे. कोई issue इसमें? Now, addition of decimal numbers to any decimal numbers. Do we know how to add two decimal numbers? For example, if I say 1, 2, 3 plus some 7, 8, 9. How do we add two numbers? Everybody is familiar with this process. Firstly, we add units place. Right? 9 plus 3. 9 plus 3 is 12. We write 12 ka 2 below this and we take carry forward 1. 8 plus 2, 10 plus 1, 11 ka 1 again carry forward 1 and 7 plus 1 plus 1 is 9. ऐसे ऐड किया जाता है तो दो नंबर्स को. इन केस हमें तीन नंबर्स को ऐड करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How do we add? Same process. Exactly same process. We add 9 plus 6 plus 3 which is 18. Carry forward still 1. Then 8 plus 5, 13 plus 3, 16. Carry forward 1. 7 plus 4 plus 2, 13. This is the addition. Right? आज इतना ही यूज होके, ये प्रॉपर्टी यूज होके क्वेश्चन सॉल्व होगा इस साल का, दिस ईयर्स क्वेश्चन. तो ऐसा मत समझो कि मैं एकदम बहुत ही बेसिक या यूजलेस चीजें पढ़ा रहा हूँ. दिस स्टिल हैज सम एप्लीकेशन. वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू डू दिस.
Fine, this is when we have only natural numbers or positive integers. What happens when we have decimal points? So if I have 0.234 plus 3.12, do you know how to add them? Same process, same process. Firstly, we just complete these 3 digits. After, whenever non-zero digits are ending, and we are adding in a sufficient number of zeros after that. Adding zeros after this does not change values. Adding zeros bit in between will change values because place values बाकी digits की बदल जाएंगे, right? Okay. So how do we add? We firstly add this place. 4 plus 0, 4. 3 plus 2, 5. 2 plus 1. Then decimal point is carried as it is, and 3 plus 0 is 3. कोई problem इसमें? No issues. Same process follow होगा, बस decimal point आएगा जहां पे भी relevant है. Again, this is whenever we have only positive numbers. Negative numbers कहीं पे भी नहीं है. We are just adding 2 numbers. (7.23 plus 9.19). इसे कैसे ऐड करोगे? 9 plus 3. 9 plus 3 would be 12. Carry forward 1. 2 plus 2, 4. And 0.9 plus 7, 16. Fine. कर सकते हो ये. Comfortable with addition of 2 decimal points, decimal numbers. पक्का? For 3 same thing you have to do. अभी 2 नंबर के लिए जो दिखाया, 3 नंबर के लिए कोई आ गया, तो सेम थिंग यू हैव टू डू. नो डिफरेंस. वी हैव टू जस्ट ऐड 3 नंबर्स. तब भी वही स्टार्ट करना है. लास्ट देखना है जो भी प्लेस है उनको ऐड करना है, कैरी लेना है जो भी रिलेवेंट है, एंड ऐड करते जाना है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यही रूल है. अब ये तुम्हारे लिए कुछ असाइनमेंट, होम असाइनमेंट घर जाके करना. ऐड दीज 2 नंबर्स बाय योरसेल्फ एंड then check your answer by using calculator. Okay. कैलकुलेटर हर किसी के मोबाइल में ऐप होता है. नया कैलकुलेटर लेने की जरूरत नहीं है. These are just random questions I have written. ये कोई मैं बना के नहीं लाया हूं. That is why ऐसे आंसर मत पूछ लेना मुझे नहीं पता. Just use your calculators and find out the answer. It is just for your practice. जहाँ एक बार वो रूल्स बैठ जाए दिमाग में कि ऐड कैसे करना है. हाँ 11 है बस वो. कर पाओगे? You have 3 days in between ना. 3 नहीं 4 ना 4 days है. After today, next class would be on Friday. So Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. 4 days you have. 0-0 है वो. ठीक है. Let us go to next subsection.
subtraction. Subtraction is in addition, we were going to the left or the right, whatever you want to say, on this hand, this side on the number line. In subtraction, we go on opposite side. Subtraction is exactly opposite operation of addition. Okay. Again, what would be the rules? Even number minus even number. Even number. Odd minus odd. Even number. करके देख लो 5 minus 3 2. Then odd minus even or even minus odd. Odd. Fine. Then subtraction of two natural numbers. Will it always be a natural number or not? No. Because imagine you are standing on 1. 1 is a natural number. And then we have to subtract. To subtract, we have to go on this side. So 1 के इस side कुछ है ही नहीं natural number में. Whenever we are trying to go on this side, you have to jump out of natural number system. So subtraction of two natural numbers is definitely not a natural number. For example, this 1 minus 5. What is it? Minus 4, which is not a natural number. Or even 1 minus 1, which is 0, not a natural number. So subtraction of two natural numbers is not always a natural number. So if you get a statement like this in 5 statement question, that subtraction of two natural number is a natural number, you have to understand that it is a incorrect statement. कर पाओगे, confuse नहीं हो जाओगे. Confuse हो जाओगे तो ऐसे 2-3 एग्जांपल लेके देख लेना कि सच में आ रहा है क्या. और अतरंगी एग्जांपल भी लेना. अगर 2-3 ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि सारे एग्जांपल एकदम अच्छे ले रहे हो. 2 minus 1, 3 minus 2, ये सब 3 एग्जांपल लेके चेक नहीं करना होता है. चेक करने के लिए थोड़े आड़े टेढ़े एग्जांपल लेके, हर अगर केस में सही आ रहा है देन यू कैन मार्क इट करेक्ट. तो एक बार 3 minus 2 देखना है तो देख लो एक बार, बट दूसरे केस में 2 minus 3 भी देखना है फिर. ठीक है, फाइन. Subtraction of two whole numbers, will it always be a whole number? Whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subtraction of two whole numbers, whole number होगा क्या हमेशा? Same thing, whole इसके जैसा ही होगा. यही मान लो, these are two whole numbers, but we don't have a whole number here, right? If you are standing on a whole number and if you go on the negative side of the number line, you can go to negative areas, right? Now, subtraction of two integers. Will it always be an integer? What are integers? Negative numbers, positive numbers, and 0. Negative integers, positive integers, and 0. So, minus 3, minus 2, minus 1, etc. And 1, 2, 3, 4, etc. So, whenever I am standing on any integers and I am jumping from one to next, बीच में कहीं रुक नहीं रहा हूं, एक से जंप ले रहा हूं, and I am going on the this side on number line. कितना भी चले जाऊं, इंटीजर पे ही आऊंगा ना. All integers are covered, all negative numbers are there, all negative distinct quantities like minus 3 भी है, minus 99 भी है, minus 29,000 सब है. All are integer. So integer minus integer will be an integer. We have this number line. Whenever we are standing on any of these integers and we are subtracting something, which means we are going on this side. तो ऐसे jump कहीं पे भी कितने भी मार लूं मैं, I'll always land on an integer, because integer में तो दोनों साइड के लोग हैं. ठीक है. Subtraction of two integers is always an integer. अब what else? Is subtraction commutative? Is subtraction commutative? मतलब for commutative we need this, a plus b, a minus b is equal to b minus a. Is it true? 2 minus 3 is it equal to 3 minus 2? 3 minus 2 क्या है? 1 है. 2 minus 3 क्या है? Minus 1 है. Not equal. So in subtraction order matters. Order matter करेगा. अब कौन सी चीज किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे आंसर चेंज हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन. सब्ट्रैक्शन इज ऑर्डर सेंसिटिव. ऑर्डर पे डिपेंड करेगा सब्ट्रैक्शन का वैल्यू. एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है. और सेम चीज, इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव? मतलब इज a माइनस बी
माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, क्या ये होगा? इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी माइनस सी, बट व्हाट इज दिस? दिस इज ए माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, आर दे इक्वल? नो, the subtraction is also not associative. Correct that in your handouts. Subtraction is neither commutative nor associative. Any problem with properties of subtraction so far? No. Then we'll see subtraction with decimal points. Anybody? Everybody is familiar with subtraction? So if I say 56 minus 29, can you do it? कैसे करना होता है? You have to subtract 9 from 6, but 6 is smaller than 9. So you have to take or borrow 1 from tens place here, right? So we get 16 minus 9, so 7, and because we have borrowed 1, here 1 is reduced, and then we get 4 minus 2 is 2. याद है subtraction of two numbers which we used to study in schools. We take another example like 234 minus 59. अब कैसे करोगे? 14 minus 9, because 4 is less than 9, we take borrow 1, so 14 minus 9, 5. Here 1 extra has to be considered because we have borrowed 1, and now 3 minus 6 or 2 minus 5, जो भी करना चाहो, but 3 is again smaller than 6, so we borrow 1, so it becomes 13 minus 6, so 7, and 2 minus 1 1. ऐसे होगा, कर सकते हो. Now tell me this, करके दिखाओ. Tell me the answer. I just want to ensure कि सच में आता है तुम्हें. हाँ हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो. टू 26 सबका सेम आंसर आ रहा है. किया तुमने दिमाग में? अच्छा चल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गाइस विथ मी या फिर सो रहे हो? यस 226. ओके, देयर इज अ चांस कि तुम्हें लगे कि ये बहुत ही सिंपल चीजें चल रही है, मुझे तो सब आता है. देयर इज अ चांस यू माइट फील दैट वे. ये करके दिखाओ. 23 minus 67. Subtraction of two integers. It will be integer, but find out what that integer is. 44 minus 44. सबका वही आना है, आ रहा है क्या? देखो क्या किसी का कुछ और आ रहा है? -44 आ रहा है, 46 आ रहा है. कौन गलत है कौन सही है? हाँ -56. अपने कैलकुलेटर से पूछ लो क्या सही आंसर है. We have 3 answers for 2-digit subtraction problem. देख लो, आ रहा है मत बोलना.
कैलकुलेटर से पूछ लिया क्या आंसर है? -44 बता रहा कैलकुलेटर। दिस नंबर इज बिगर देन दैट नंबर, है ना? तो वेन एवर वी हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसे डायरेक्ट डिजिट टू डिजिट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, हमें करना पड़ता है 23 माइनस 67 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 67 माइनस 23। ये कर सकते हो आराम से। दिस यू कैन डू इजीली, विच इज 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 2 4। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या करते हो तुम इधर से बोरो लेते हो। किससे बोरो ले रहे हो? कोई है ही नहीं बड़ा उधर। whenever you have bigger numbers on the left hand side, then you can borrow and subtract, but here there is nothing to borrow because these are smaller numbers. So you do just simple trick, you take minus sign common and do normal subtraction in this side and you get the answer. ठीक है, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन में 3 डिफरेंट आंसर आए। ठीक है, नाउ डेसिमल, सेम स्टोरी। डेसिमल में कुछ नहीं बदलेगा, बस बीच में एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। decimal will go exactly the same way like we did in integer values. So whenever we have to subtract, let us say 7.139 minus 3.88, कैसे करेंगे? We firstly completed the number so that both the numbers have same number of digits. Then how do we subtract? We subtract 0 from 9. We confirm कि क्या ये नंबर बड़ा है। फर्स्टली वी कंफर्म कि क्या ये नंबर बड़ा है, क्या ऐसे सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे है यस, बिकॉज हियर वी हैव 7 एंड हियर यू हैव 3 पॉइंट समथिंग, तो 7 पॉइंट समथिंग तो बड़ा ही होगा 3 पॉइंट समथिंग से। तो 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 8 वो नहीं कर सकते, तो 1 बोरो। 13 माइनस 8 5, 11 माइनस 9 2 एंड 7 माइनस 4 3। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, राइट। If we have 2.92 minus 5, कैसे करोगे? उल्टा करना पड़ेगा। Now instead of doing this we do minus of 5 minus 2.92, तो क्या आएगा ये? करके बताओ। 2.08, फिर से चेक करो सुनील। If you add 0.08 to this, you go to 3, और 3 से 2 आगे जाना है, तो 2.08 माइनस ऑफ 2.08, राइट। ठीक है, अब कंफर्टेबल इन सब्ट्रैक्शन, then some problems for you to try out at home.
अगेन रैंडम नंबर्स, एड सब्ट्रैक्ट, सॉरी एडिशन आ गया क्या इधर, एड सब्ट्रैक्ट, डू वॉट एवर यू कैन विद दिस एंड चेक योर आंसर्स यूजिंग कैलकुलेटर. हाँ 9 पॉइंट. ठीक है. Everybody comfortable with addition and subtraction? Now let us see PYQs that were asked this year. Only with addition and subtraction we could have solved them. Come to question number 1. CSE 2023, first question on next page. We have done this in our first class, but now we'll do it again. I want you guys to try it out. What we have is, we want to find out sum of all possible numbers which are 4-digit numbers, and these digits are out of 1, 2, 3, 4, and it is given that this number should be less than 2000. Understood the question? We have a 4-digit number. All these 4-digit numbers are out of these 4 digits only. 1, 2, 3, 4 इतना ही यूज हुआ है in various orders. 1, 2, 3, 4 हो सकता है, 3, 2, 1, 4 हो सकता है, etc. etc. But the condition is this number should be less than 2000. And question is, what is the sum of all those possible numbers? जितने भी होंगे. Try it out. We have done this in our first class. आप थे फर्स्ट क्लास में ना, ओरिएंटेशन सेशन में आप थे फर्स्ट क्लास. हाँ हाँ हाँ, उस दिन किया था हमने ये सवाल इन आवर क्लास, वो जो इस फ्राइडे वाला क्लास था. यू वर ऑल्सो देयर, प्रशंसा है ना, आप भी थे, आप नहीं थे? अच्छा, कोई बात नहीं, ट्राई इट आउट, आपका हो गया, गुड. यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हो? अश्विनी, सुनील, दिनेश, आर यू गाइस सॉल्विंग? जमीर, पास में आंसर नहीं आ रही है तो कैसे, हो ही नहीं सकता. हाउ आर यू डूइंग इट? कैसे कर रहे हो? ओके, राइट. देन वी आर जस्ट ट्राइंग व्हाट आर द अदर पॉसिबल नंबर्स. यही कर रहे हो, आपका समझ गया. What we are given is this number has to be less than 2000. If this number out of these 4 digits is less than 2000, yes, A is the answer. This particular digit, the thousands place, it has to be 1, because if you have 2, 3, 4 here,
ये पूरा नंबर 2000 से बड़ा हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे 2 डालो और फिर आगे 134 या 413 कुछ भी ऑर्डर में डालो, दिस नंबर वुड बी बिगर देन 2000, राइट? पक्का समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? दैट इज व्हाई ओनली वन कैन कम एट द 1000 प्लेस। ठीक है जमीन, at the 1000th place we can only have one year. Now once we fix one, अब बाकी देखना है बस कौन से कहाँ पे आ सकते हैं। कंडीशन इज वी कांट रिपीट द नंबर्स, तो ये 2 3 4 एक बार यूज करना है हर डिजिट को। तो लेट अस राइट डाउन ऑल पॉसिबल नंबर्स। वी हैव दिस 1, देन लेट अस से 2 3 4, then 1 2 4 3. We first fixed 1, that is because of the given condition. Then second we are fixing 2 here and 3 writing 3 4, fixing 2 writing 4 3. Up fixing 2 is over, then we fix 3 here and we write 2 4. We fix 3 here, we write 4 2. Then we fix 4 here, right? 1 3, we write 4 and 3 1. Oh, 2. These are all the possible numbers. Over, that is all. इतना ही है possibilities, right? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐड करके बताओ सम क्या है। Question is only asking us that we can add now. This 6 number we have seen how to add now. We add units place. कितना units place का addition? Now addition में भी instead of just doing it for the sake of doing it manually, we can see for some patterns. How patterns? 2 3 4 2 3 4. What is 2 plus 3 plus 4 plus 2 plus 3 plus 4? 2 plus 3 plus 4 is 9 and 9 plus 9 18. 18 का 8 and carry forward is 1. This would be again 18. 2 3 4 2 3 4 plus 1 19 का 9 again carry word, again 18 plus 9 carry 1, and then this is 7. That is the answer. Such approach doesn't strike in examination hall because 1, we are unfamiliar with such approach. We are going with predetermined mind कि यार formulas रट के गया हूं तो वो तो यूज तो करना है कहीं ना कहीं. We don't keep our options open, like देखना है बस क्या possibilities है, manually देखना है. That is one option always available to you. And 3, you are under immense pressure of time and examination, time and occasion. क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आपका नाम? जयेश. आपका नाम? विभाष. श्याम. विपुल. हार्दिक. हार्दिक पांडे. यस. ठीक. आपका नाम? निरंजन. ठीक. चलिए आगे. दिस क्वेश्चन इज ओके प्रशंसा? पक्का? कोई भी डाउट किसी को भी? सिंपल एडिशन प्रॉब्लम था एट द एंड. वी हैव यूज्ड नो अदर थिंग्स देन एडिशन एंड ये नंबर 2000 से स्मॉल है उसका एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? दोनों का हो गया आपका? चलो तो लेट अस गिव यू सम चैलेंज. उसके बाद वाले का बाद वाला. लेट पी पी क्यू क्यू आर आर डू. हाँ. अच्छा. हम्म. ठीक है.
फोर्थ से नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? फिर एक बार कर लो चेक। उसके अगला वाला करो। दैट इज ओनली बेस्ड ऑन एडिशन, बट दिस वाज क्वेश्चन टू बी लेफ्ट अलोन इन एग्जामिनेशन हॉल। PPQQRR जो है छोड़ ही देना था। गुड, गुड डिसीजन। वो होता भी नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, बस वो 15 मिनट खा जाता। हो गया? याद था ना कैसे करना है? फ्राइडे के क्लास से याद था कैसे करना है। आंसर भी याद है ना? हाँ। People who were not in the Friday's class, they can try an attempt. अश्विनी, सुनील, दिनेश, आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEFR 3 डिजिट नंबर, वो वाला। And again, whenever you want to speak, you can unmute yourself, and I have headset with me. We can interact whenever you want. Just let me know. See, Sunil, I mean, of course, that assessment will come with practice, with actually attempting it, but also with the fact that if there are multiple sub questions involved, it will generally take more time to solve that question. Those are the indicators, but unless you start actually attempting the question and give it a minute or two, you cannot know that is it doable in examination hall or not. But next important decision that you can definitely make is, अगर वो 1-2 मिनट में नहीं हिल रहा है क्वेश्चन, तो अगले 5 मिनट में भी नहीं हिलेगा। तो डोंट टेक इट ऑन योर ईगो एंड जस्ट मूव ऑन। वो इंपॉर्टेंट है rather than getting stuck with the same question. 80 तक जा भी सकते हो ना, 80 तक पहुंचते हो नहीं हो, you don't even touch the 80 questions that you have. हो गया? निरंजन, आपका हो गया? ABC प्लस DF वाला? नहीं? काम? नहीं? Okay. What we are given is, we are given two 3-digit number ABC, and we are adding it to DEF, and the answer which is given is 1111. This is given, and what we want to find out is A plus B plus C plus D plus E plus F. That we want to find out. Now we apply nothing but how we usually add. It is also given that all these digits A, B, C, D, E, F are different and they are non-zero. It is given in the question itself कि they are non-zero. तो हम क्या करेंगे? We add C plus F. We add C plus F and we get 1 here. तो C plus F क्या होना चाहिए? It can either be 1 or 11. C plus F can be 1 or 11. तभी तो इधर 1 आएगा. But can it be 1? 0 होना चाहिए फिर और एक 1 होना चाहिए for C plus F to be 1. But 0 is not allowed because these digits are non-zero. It is given. So C plus F would be 11. It has to be. There is no other option. So C plus F is equal to 11. उसका 1 आएगा इधर and 1 would be carried forward. We are just applying our addition rules. Then what we have, B plus E plus 1 is again 1.
So this 1 can come from 1 or 11. 1 से नहीं आ सकता because this cannot be 0. 1 से कब आएगा? When we have 0, 0 and 1. That is the only choice when we get addition as 1. But that is not possible because these are non-zero numbers. So what we have, b plus e plus 1 is 11. So b plus e क्या है? b plus e is equal to 10. Then b plus e plus 1 is 11. ठीक है? And again one here and 1 is carried forward. Same rule. A plus d plus 1 is 11. So a plus d क्या है? A plus d is 10. This is what we have. Now we add all the quantities on left hand side. We get this a plus b plus c plus d plus e plus f. And all the quantities on left hand, right hand side, we get 31. पीपी क्यू क्या आ रहा है? अच्छा, आपका सी आ रहा है. पोल्स अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट आंसर आ रहा है आपका. ओके, आई कैन ओनली से दैट वन ऑफ यू इज करेक्ट. विल डू दिट. पीपी क्यू क्यों आ रहा? No, the fourth question from top. You attempted? What is the answer you got? A, B, C, D? Huh? Neither one nor two. No, that we have to yet do. I am talking about fourth question from top. Like this is the second question, na? This is the second question. I am talking about fourth question. Huh? C आ रहा है. Okay. Yes, but this question, this was very much easy, very attemptable. क्या यूज किया हमने? We just applied our addition के rules. और कुछ यूज नहीं करना था इसमें. It was a very, very, very easy question. Okay. निरंजन, easy था, समझ गए? क्यों? श्याम, सॉरी. हार्दिका, आप तो समझ ही गए, आपने अटेम्प्ट भी कर लिया था. ठीक है, let us go back to our multiplication and then we'll come back to our PYQs, because some PYQs have used both these concepts together. Multiplication is nothing but repeated addition. What do we mean by that? If I have to perform this addition, 9 plus 9 plus 9 plus 9. If I have to add 9 4 times, it is a repeated addition. We are repeating same number, we are adding same number to itself. Instead of writing it this way, how do we write it as? We write it as 9 into 4, 9 times 4, or 9 fours are. Whenever we look for tables, we talk in terms of 9 ones are, 9 twos are, 9 threes are, etc. And the answer is 36. It is nothing but repeated addition. Multiplication is repeated addition. So what we want to do here is, we just want to repeat the rules like we did for addition and subtraction, and then we want to get familiar with multiplication of two integers and multiplication of two decimal numbers. Okay. So this is your multiplication, nothing but repeated addition. What are the rules? Multiplication of two even numbers is even number. Even into even is even. Even into even is even number, right? Even into odd, again even number. करके देख लो, 2 into 4, 2 into 3. Why is it even number? Because what is even number? Even number is a number of which 2 is a factor. Number divisible by 2 is even number.
तो अगर 2 फैक्टर है इसका तो ये इवन होगा, 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो इनफैक्ट दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से तो होगा ही, इवन नंबर तो होगा ही। अगेन हियर यू हैव इवन नंबर, so 2 is a factor, so 2 is a factor of multiplication as well. So even into odd or odd into even is even number, and odd into odd it will be odd number because there is no 2 here, there is no 2 as a factor. How is 0 even? 0 is divisible by every number, so 0 is divisible by 2 as well. 0 cannot be odd, so 0 has to be even. Then multiplication, याद है multiplication कैसे करते हैं? Did you remember multiplication के rules? If you want to multiply, let us say 37 into 43, can we do it? कैसे करते हैं? We multiply this number by firstly 3, 3 sevens are 1, carry 2, 3 into 3 9 plus 2 11, and before multiplying by 4 we add 0 here, and then 4 7 28, again carry forward 2, 12 plus 2 14, and then we add 1 9 5 1, right? Do you remember this? पक्का करके दिखा दो और एक कोई मुझे. Let us take random numbers. 2 3 1 into 2 1, so 1 2 3. How will you do this? करके दिखा दो. मल्टीप्लीकेशन, हाँ इतना छोटा आ ही नहीं सकता आपका. हाँ 4 डिफरेंट आंसर दे रहे हो मल्टीप्लीकेशन का. अच्छा 28413 is the answer according to calculator. 28413 is the answer. कैसे करोगे? 3 into this number which would be 693, then you add 1 0, you multiply by 2, it would be 462, then you add 2 zeros and 1 is same, 2 3 1. To add, here you had 3, here you have 1, here you have 8, right? nahi, 6 plus 6 plus 2 12 plus 2 14, then you have 8 and 2. ऐसे करना होता है. क्या कर दिया था? मिस ही कर दिया पूरा. गुड. हाँ दिस इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग सो अर्ली. चलो ये भी कर लेंगे, ऐसी मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए इन एग्जामिनेशन. ओवर कॉन्फिडेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना. लेट अस डू वन मोर. थोड़े डिफिकल्ट नंबर्स है लेकिन अच्छे से कर लेना.
सुनील, एक डिजिट का तुम्हारा कुछ तो झोल हो रहा है, बाकी तो 4 3। देखो फिर तुम्हारा भी एक डिजिट का अलग का झोल हो रहा है। एडिशन में गलती कर रहे हो क्या फाइनल वाली? हो गया क्या आ रहा है? 439 473। यस यस अश्विनी, दैट इज करेक्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यू कैन डू नाउ। ओके, other few basic rules. Any number multiplied by 1 is that number itself. Any number multiplied by 0 is 0. Any number multiplied by itself is called its square. Another terminology. Then what is number multiplied by 10, 100, 1000, etc.? If we have any number, let us say 1 2 3, and we multiply it by 10, क्या होगा? If you multiply it by 10, answer would be 1 2 3 0. If you have 10 here, we add 1 0 here. If you have 100 here, we add 2 zeros at the end. If we have 1000, we add 3 zeros. Right? Whatever power of 10 here you are multiplying with, we just add that many number of zeros at the end of the number in multiplication. कोई इशू नहीं? पक्का? Then rules for multiplication of positive and negative numbers. I hope you remember them. If we have positive number and you multiply it with positive number, what will we get? Positive number. यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं. If you multiply negative number and with negative number, what do we get? Negative into negative is also positive number. So for example, -3 into -4. क्या होगा? We just forget that there is a negative sign. We multiply it as it is. Multiplication is 12, and minus become plus. So it is plus 12. Finally, negative number into positive number. क्या ये क्या होगा? Negative number. In general, if we have odd number of negative signs, then we'll have negative number. If we have even number of negative signs, we'll have पॉजिटिव नंबर. तो ये अगर मैं ये बोलूं कि -2 इंटू -3 इंटू -4, व्हाट वुड बी द आंसर? 4 into 3 into 2 is 24, and minus is plus, again plus minus is minus, so answer is -24. कोई issue? If we have negative numbers, negative sign odd number of times, we have negative number. If we have it even number of times, let us say -1 into -2 into -3 into -4, अब क्या होगा आंसर? This is 24 into 1 is 24 again, and we have 4 negative signs, so it is plus 24. ठीक है? हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा. हाँ, here what is multiplication and division? This is just opposite operation of multiplication, तो साइन के रूल्स सेम होंगे. एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? लेट अस से वी हैव 23 प्लस -47. हाँ, राइट, दिस इज जस्ट नथिंग बट दिस इज 23 -47, जो हमने सब्ट्रैक्शन में देख लिया. इट इज माइनस ऑफ 47 -23. अब आ गया ना बड़े नंबर का साइन अपने आप. ओके, ठीक है. Then we want to cover now final thing, and you can also say that multiplication of two integers is always an integer. What is multiplication? It is nothing but repeated addition.
तो एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इंटीजर था, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर भी इंटीजर ही होगा. तो मल्टीप्लीकेशन एट द एंड इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. करेक्ट है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर. यहाँ पे कोई साइन का झोल नहीं है नेचुरल नंबर के लिए. वो तो पॉजिटिव साइड ही जाएगा, जो भी जाएगा, निगेटिव कभी जाएगा नहीं, जीरो भी नहीं जाएगा कभी. देन मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव. ऑर्डर डज नॉट मैटर. 2 into 3 इज 3 into 2. कोई इश्यू नहीं है. राइट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कम्यूटेटिव. एंड फाइनली मल्टीप्लीकेशन विद डेसिमल्स. याद है रूल्स? लेट अस से दिस 1.2 into 2. व्हाट इज इट? 2.4. 1.2 into 0.2. What is it? What is the working rule? Working rule is we forget that there is a decimal point. We forget that there is a decimal point. We multiply as usual and then we try to place decimal point after same number of digits from right as there are number of digits here in total. यहाँ पे कितने digits है after decimal points? Only one. यहाँ पे 0. तो यहां से एक जगह पे decimal point दोगे. Here there is one after decimal. Here also there is one after decimal, one digit after decimal. So total 2 digits after decimal. तो यहां से 1 2 यहां पे decimal point आएगा. ठीक है. If you have 0.12 into 0.2, अब क्या होगा? 12 into 2 is 24 and here 2 plus 1 3. तो 3 places के बाद point आएगा 1 2 3. ठीक है. Let us take few more examples. Hmm. 2.3 into 4 क्या होगा? हाँ, आंसर बता दो पहले. 23 का टेबल तो याद ही होगा तुम्हें. हाँ, गुड. 23 का 22 का टेबल याद है? 23 का 9.2. ठीक है. आपका नाम मैं भूल गया. आप ही विभास. आप फॉलो कर रहे हो ना? 9.2. ठीक है. ठीक है ना? सब लोग फॉलो कर रहे हो ना? नाउ 2.3 इंटू 0.4 क्या होगा? 0.92. 0.23 इंटू 0.4 0.092. फाइन. 0.23 इंटू 40. 0.920. 0 यहाँ का हटा भी सकते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. कुछ नहीं है. 4 को 4 इंटू 10 लिखा. पहले ये मल्टीप्लीकेशन किया और 10 से मल्टीप्लाई किया. इधर 10 से मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 1. देन इसका इसका क्या होगा? हाँ, 9.2 होना चाहिए. 0.92 किसने बोला? ये तो ये 0.4 नहीं है ना, ये 40 है. राइट. देन 2.3 इंटू 400.
बताओ 92 की 920? 920. Let us first forget about these zeros. Let us consider them separately. This is just 4 into 100, right? 400 is 4 into 100. अब क्या होगा आंसर? हाँ, अब तो 9.2 होगा, बट अभी 100 से मल्टीप्लाई करना बचा है. हाउ डू वी मल्टीप्लाई बाय 100? 1 2 920. Let us come back to this after we see. Again, we'll just revise. How do we multiply by 10, 100, etc.? I have any number. Let us say 1, 2, 3. We have seen what happens when you multiply integers, but now we'll see what happens when you multiply by multiply decimal places. 1, 0, 1. What happens if you multiply by 10? This is decimal point here. Whenever you multiply by 10, this decimal point shifts by 1 to the right. To the right. तो ये होगा 1, 2, 3, 1.01. Okay. Whenever you multiply by 100, two places. If you multiply by 1000, 3 places. 10,000, 4 places, and so on. So if we have 0.1 into 100, what would it be? What would it be? Huh? 10, 1 and 1. It would be 1, 0. एक राइट आ गए तब 1 आ गया, बट एक और 10 बचा है, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा. श्याम, नो इश्यूज ना? मल्टीप्लिकेशन ऐसे सीख रहे हैं हम लोग, एकदम डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 20, 10, 100 वगैरह से. प्रशंसा, यस. आपका नाम मैं भूल गया. गणेशन. और व्हाट डू आई कॉल यू, सिल्वा और गणेशन? एनीथिंग? सेल्वा. और आपका नाम? हरिता. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे फाइन. नाउ व्हाट इफ वी हैव 0.23 into 400? 92. वन मोर वे टू थिंक अबाउट इट इज, यहाँ पे 400 है ना, तो ये 0 को पहले ऑपरेट कर दो. दिस इज 100, दिस इज 4 into 100. तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 शिफ्ट कर दोगे तो 23 बचेगा बस. ऊपर 23 बचा, नीचे 4 बचा, 92. किसमें डेसिमल का मैंने, आई एम गेटिंग रीड ऑफ द डेसिमल ना, यूजिंग दिस इनटू 100 into 4. What is this into 100? 23. We get rid of the decimal point and फिर भी normal multiplication. Any which way you think about it is fine. Ultimately answer correct आना चाहिए. Comfortable with multiplication using decimal places. Now again exercise for you. Just any practice problem. Perform this multiplication and check the answers using calculator.
कर सकते हो ना, कर पाओगे? इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी वी विल कम बैक टू इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट ट्राई इट योरसेल्फ. यू हैव 3 days. एक दिन एडिशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, एक दिन सब्ट्रैक्शन के कर लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दिन में कर लेना, एक दिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेना, एंड द थर्ड डे स्टार्ट डूइंग वर्कशीट. यू ऑल गॉट वर्कशीट? वर्कशीट सबको मिल गई है, डे 1 पे ही दी थी, राइट? अरिथमेटिक वर्कशीट यू गॉट, राइट? फॉर दोज हु डोंट हैव इट यू कैन कलेक्ट इट. ठीक है, स्टार्ट ट्राइंग इट आउट. कुछ क्वेश्चन नहीं हो शायद जो कि अगले सेक्शन से है, अगर नहीं होते वी विल डील विद देम व्हेनेवर वी अराइव एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन. बताओ. वर्कशीट में? अच्छा, हाँ हाँ हाँ. हम्म. आ, अच्छा, कोई बात नहीं सुनील, आई गेट इट अपलोडेड, विल कम टू इट. जस्ट लेट अस जस्ट फिनिश दिस. आज ही हो जाएगा वो, अभी है टाइम अपने पास. ऐसा कोई वो, इफ यू वांट मी टू प्लक आउट मेथड आउट ऑफ थिन एयर, ऐसा नहीं होगा. जस्ट अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स यूजिंग दिस. हमारा एम वही है इस क्लास में कि आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग विच यू कैनॉट रिप्रोड्यूस इन एग्जामिनेशन. उसका तो कोई यूज ही नहीं है आपके लिए. अपन बस इतने ही कंसेप्ट पढ़ेंगे विच कैन बी अप्लाइड इन एग्जामिनेशन और विच आर रिलेवेंट फॉर यू. हाँ, तो नहीं नहीं, हाँ तुमने गेस वर्क किया ना. गेस वर्क नहीं, देयर इज अ मेथड टू डू इट. तुमने शायद उल्टा चले, यू वेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, बट अगर पहले एडिशन से स्टार्ट करते. अच्छा, हाँ. Last section, let us come to division, and then we will come to PYQs. All the PYQs we'll do after that. You in from these 4 sections only there were 13 questions in this year's CS. Okay, so this is important section. एकदम बेसिक्स है, कोई फैंसी कंसेप्ट नहीं है. अपने जो 55 वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, बस यहाँ पे हम डेसिमल्स के साथ भी खेल रहे हैं, एंड लेटर विल डू द सेम प्रॉपर्टीज विद फ्रैक्शंस एज वेल. इसी बुकलेट में है, बट दे आर लिटिल बिट लेटर. राइट नाउ वी आर doing for decimals. So division is opposite operation of multiplication. Whenever we divide, what we do, we have a bigger quantity and we reduce it into smaller equal quantities. So if you have a cake is a popular example. If you have a single cake and we want to divide it into three portions, you do something like this, and we call each part 1 divided by 3. Division is cutting the bigger sections into smaller sections. Long division, everyone remembers how to divide. Long division याद है, बचपन में पढ़ा था. Whenever we want to divide one number by two number, we used to do something like this. So let us take one number here. Let us say 1, 2, 3, 4, any number, random number, and let us try to divide it by a simple number. Let us say 9. Okay, how do we divide? We firstly look at these digits. 9 ones are 1. We want to go till multiple of 9 which is less than 12. So 9 ones are 1. So we have 9. Sorry, 9 ones are 9. So we subtract 9 from here. 12 minus 9 is 3. We take next number from the digit, and now we divide 33 by 9. You get 9 3s are 27. So minus 27. We subtract, we get 6, and we borrow next number. कोई गलती हो रही है? नहीं. 64. Now we divide again this 9 by 64 by 9. We get
9 into 7 is 63. So minus 63, we get 1 as a remainder. When we get this number as lesser than our 9 and there are no more digits remaining, we stop our division process. We call this number as a dividend. Dividend. It is there in your notes. No need to write down. है आपके पास. We call this 9, the number with which we divided, as a divisor. We are dividing using 9. This number is called quotient. And finally, this is remainder. UPSC is not interested in this remainder. So when we divide any number by any number, we get an equation like this, which is written there: dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Right? So in this example, 1, 2, 3, 4 is equal to 9 into 137 plus 1. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Fine. Whenever we are dividing any number, let us say A by some other number B, we get A is equal to B into quotient plus remainder. This kind of equation. This is called as division algorithm. No need to remember the name, but this is called as division algorithm. It solves a lot of the questions that we get. We'll learn about it in next booklet. This is arithmetic first booklet. Next booklet में शायद ये है या फिर arithmetic 2 में है. I don't remember. I think it is in arithmetic 2. Anyway, we'll cover it in our courses, in our lectures. And what is the only condition for remainder is that remainder cannot be more than divisor. ये जो रिमाइंडर है वो 9 से बड़ा नहीं हो सकता. अगर बड़ा है तो हम उसको फिर से एक बार डिवाइड कर लेंगे. Basically, if instead of 9 we have instead of 1 we have 10 here, so 10 is bigger than 9, which is not allowed. So what we do is we write this 10 as 9 into 1 plus 1, and then we absorb this 9 into this number. 9 is common, 137 plus 1 plus 1. So again, this is divisor, this is the new quotient, and remainder is less than 9. Remainder always has to be less than divisor. And this factor, this particular fact was used in this year's CSAT. It was important in one question. We'll see the question when we come to it. Fine. Remainder, quotient, divisor and dividend. 4 terms we saw. Long division ka process you should be familiar with. You should be able to divide one number by another. Try it out. Again, 1, 2, 3, 4. Let us take the same number, but now let us divide it by 11. कर सकते हो? हो गया? क्या आया? क्वोशंट इज 112 एंड रिमाइंडर इज, सबका यही आ रहा है. ठीक है. What if I have 13 here? Right, right. $90. 12 is remainder and quotient is 94. अच्छा, okay, good. So you are familiar with the process. आ गया? 13 का टेबल याद नहीं है ना, इसीलिए से पूछा था मैंने. और टफ करना होता तो 23 का पूछने वाला था. तो सोचा चलो पहले 13 का पूछ लेता हूँ, 23 का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. Foot in the door phenomena. सुना है ethics में? Have you studied it? There is something called as foot in the door phenomena. If you want to ask something bigger, some bigger favor from someone, you don't directly ask for bigger favor.
यू गो एंड आस्क स्मॉलर. एक बार वो दे लेता है तो नाउ ही इज कमिटेड टू गिविंग. तो उससे थोड़ा बड़ा मांगो, फिर उससे थोड़ा बड़ा मांगो. दिस इज कॉल्ड फुट इन द डोर फिनोमेना. यू स्टडी इट इन एथिक्स. इफ यू आर नॉट, जस्ट go home and read about it. In attitude chapter we learn about it. एटीट्यूड है ना एथिक्स में, पूछे नहीं जाते ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन, बट इन एटीट्यूड चैप्टर बट दिस फिनोमेना इज टॉट. एंड दिस इज नॉट, इट मे नॉट बी यूजफुल as it is from exam perspective, but in real life scenario is very powerful tool. One of my friends has recently used it very cleverly. So he wanted a job at some place, but he wanted the job at his terms. His terms were कि मैं तुम्हारे यहाँ पे काम करने आऊंगा नहीं, ऑफिस वर्क नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट वर्क फ्रॉम होम, आई डू इट एट माई पेस, बट पे अच्छा चाहिए. तो he didn't tell them everything at first instance कि मुझे ऐसा ही जॉब. He just went through the hiring process. He went ahead and proved them that he is the best. So they offered him a job. Now they are committed to him. And he said, okay, you are offering me a job. They asked him, 5 days a week you have to come and we'll give you some salary, X salary. So he said, okay, let me think about it. Then he reverted them that I cannot come 5 days a week. I have other emergency. He told them something. I don't remember what, or I don't know what. So he said, I can come 2 days. They said, okay, we wanted 5, but you are the best. So 2 days is fine. Some salary would be reduced, but come for 2 days. That would be good. He said, okay. Then 2 days after that, he told them that I can come only on Saturday, Sunday. Now they're actually committed to him. So he told them Saturday, Sunday. They said, no. Saturday, Sunday तो हमारा ऑफिस ही बंद होता है. तुम आके क्या कर लो? But you still have the best. You still are the best, and we don't want to lose you. So what we are offering you is work from home, work at your pace, and salary would be some adjustment, something which we wanted in the beginning. अगर वो फर्स्ट में ही ये बोलता उनको कि मुझे वर्क फ्रॉम चाहिए, तो उसको देखते ही नहीं उसकी तरफ. व्हाई? बिकॉज उनको रिक्वायरमेंट ऑफिस जॉब वाले का था. बट वंस दे आर कमिटेड टू हिम, he can get what he wants. Put in the door phenomenon. हाँ. ये लिखोगे कैसे यार पेपर में? पेपर में एग्जाम्पल लिखने का कंस्ट्रेंट इज कि यू कैन नॉट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग दैट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल शुड बी एक, हाँ, मतलब 2-3 लाइन से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज बाकी लिखने के लिए जगह नहीं है. फिर एग्जाम्पल्स आर टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स. अगर आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स ही कम है तो कितने एग्जाम्पल फिर एक ही दे पाओगे पूरे पेपर में, पूरे क्वेश्चन में. दैट वुड बी अनवाइज. इंस्टेड गिव एग्जाम्पल विच एग्जामिनर ऑलरेडी नोज. महात्मा गांधी वगैरह पॉपुलर क्यों एग्जाम्पल्स है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, हर किसी को उनकी लाइफ की स्टोरी पता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. गांधी की शुगर स्टोरी बोला तो पता है एग्जामिनर को क्या बोलने वाला है ये बच्चा. कि एक गांधी जी के पास एक औरत आती है अपने बच्चे को लेके कि मैं अपने बच्चे को कैसे शुगर कम खाने को बोलूं. तो गांधी जी बोलते नेक्स्ट मंथ लेके आओ मेरे पास, और नेक्स्ट मंथ उसको बोलते कि बेटा शुगर कम खाओ, अच्छी बात नहीं है वगैरह. तो औरत बोलती है कि ये तो आप लास्ट मंथ भी कर सकते थे, 1 महीना क्यों बोला? तो पहले मैं ही शुगर ज्यादा खाता था, सो आई कैन नॉट बी टेलिंग हिम व्हाट टू डू अनलेस आई डू इट माई सेल्फ. तो ये यूज होता है एग्जाम्पल बहुत बार, एसएस में भी होता है एंड उसमें भी होता है, एथिक्स में भी होता है, एंड एवरीबडी नोज इट. तो यू कैन जस्ट शॉर्ट रेफरेंस दे सकते हो. या फिर इन एंशिएंट इंडियन पैराबल ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, पता है ये स्टोरी सबको. 4-5 अंधे लोग हैं, हाथी के आजू बाजू में खड़े हैं. एक बंदा हाथी का पैर देखता है और बोलता है कि हाथी तो खंबे जैसा है. हाँ, एनीथिंग यू कैन स्टार्ट विथ एंशिएंट इंडियन पैराबल ऑफ एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन. इतना जब बोलोगे देन ऑल्सो एग्जामिनर नोज व्हाट यू वांट टू से. एग्जामिनर नोज की ये स्टोरी है, यही होने वाला है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. Whenever you come across example, write it down.
You are anyway reading a lot. In your other syllabus, you are reading a lot. You are reading newspapers. And if not, sit one day कि आज का टारगेट है मुझे 20 अच्छे एथिक्स से एग्जाम्पल चाहिए. Do that. There are these websites like betterindia.com where you will find examples of officers who are doing good work. Do this exercise yourself once, and towards the end of our course, I will give you a list of my examples. I have no use of them now. My attempts are over. Mine was mathematics. I don't know about this approach. Sunil is also saying that there is another approach where before negotiating, people ask for way too much and then they settle for middling ground. तो पता है आपको कि आप मेरी अभी की सैलरी के औकात है 10 लाख रुपए, तो मांगूंगा मैं 20 लाख रुपए, तो जाके वो 12 लाख पे मान जाएगा. तो मुझे 10 ही चाहिए, तो ऊपर 12 मिल गए, तो अच्छी बात. बार्गेनिंग किया है किसी ने कभी इन मार्केट्स? यही किया जाता है. हाँ, कोशिश कर. आउटरेजियस बार्गेनिंग करके देखो कभी. हाँ हाँ, मेनी टाइम. So I went to Manali in college. One person comes and it sells me प्योर केशर, एकदम प्योर केशर है सर. वो बोलता है कि 550 रुपए का है वो, 550 रुपीज वन स्मॉल बॉक्स. मैंने उसकी तरफ देखा, तो देख पैसे तो नहीं है मेरे पास. आई टुक माय वॉलेट, 50 रुपए है, लेना है तो ले वरना भाग. उसने ले लो सर. आई गॉट टू पे फॉर 50 रुपीज. हाँ, again there was one incident. I was with my friends in CP. The guy comes selling me original Ray-Ban goggle. He says original Ray-Ban है, custom का माल है. Popular excuse. He says 2300 में दे दूंगा, आप ऑनलाइन प्राइस चेक कर लो, 5500 का है. माई फ्रेंड वांटेड, मैंने बोला चाहिए? बोला हाँ हाँ चाहिए. मैं उसको बोला 100 का दे दो. उसने दे दिया. outrageous bargaining skills. तो मेरी मदर के साथ हुआ था. शी वेंट टू दिस प्लेस, सम टूरिस्ट प्लेस, आई डोंट रिमेंबर. शी वेंट टू द शॉप एंड शी जस्ट क्लेम्ड, क्या मैंने पहले आपकी दुकान से ही मैंने लेके गई थी. वो बोलता मेरी दुकान ही 2 महीने पहले खुली है. नहीं नहीं, आपकी दुकान थी, बाजू में थी, ऐसा कुछ. तो दे वुमेन विल डू एनीथिंग फॉर बार्गेनिंग. हाँ, मास्टर बार्गेनर्स. हाँ, राइट. तो वॉलेट में 50 रुपए का अभी सॉल्यूशन है उनके पास कि वो बोलते हैं यूपीआई कर दो. नाउ यू डोंट नीड कैश, यू कैन डायरेक्टली गिव यूपीआई. लेट अस कम बैक टू डिवीजन. What is number divided by 1? Number divided by 1 is itself, and remainder will always be 0 when number is divided by 1. So when divisor is 1, you will always have 1 2 3 4 here, number is itself, and remainder will always be 0, right? So when remainder is 0, we say that this number is divisible by divisor. This is the test of divisibility, that whenever remainder is 0, we say that number is divisible by another number, or number is a factor of 1 is a factor of 1 2 3 4. We are just using different words. If remainder is 0, number is 1 2 3 4 is divisible by 1, or 1 is a factor of 1 2 3 4, or in other way, if 1 is a factor of 1 2 3 4 or 1 2 3 4 is divisible by 1, then remainder is 0. Both ways it is true. Remainder 0 है तो ये complete इसका factor है या फिर इससे divisible है. If divisibility condition is satisfied, then remainder is 0. Right?
So every number divided by 1 is number itself and remainder is always 0. Every number divided by itself is 1. 1, 2, 3, 4 divided by 1, 2, 3, 4 is quotient is 1, remainder is 0. So number is always divisible by itself, or number is always factor of itself, and division is always 1. 1, 2, 3, 4 divided by 1, 2, 3, 4 is always 1. Number divided by itself is always 1. What is 0 divided by any number? 0 divided by any number 1, 2, 3, 4. It is 0. Because how do we define this? Division is defined as reverse operation of multiplication. Na? So if 0 divided by 1, 2, 3, 4 is some number k, then 0 is equal to 1, 2, 3, 4 into k. Now k can only be 0, only one value. So 0 divided by any number is 0. Right? What is any number divided by 0? This, it is not defined in mathematics, not infinity. It is not defined. Because infinity is not a number. Infinity is a abstract concept. We'll talk about infinity some other time if you are interested, because infinity in itself is a very intriguing concept. There are different levels of infinity. So one infinity is bigger than another infinity. It is called as cardinality. There is an entire theory of infinities developed by mathematician Cantor. Anyway, so 1, 2, 3, 4, any number divided by 0 is not defined. Fine. So if we have this number as k, let us say, so we have 1, 2, 3, 4 is equal to 0 into k. So this number, if for any k, will be 0. So we get 1, 2, 3, 4 is equal to 0. Contradiction. So that is why this number is not defined. k ऐसा कोई है ही नहीं. Fine. Now we come to the final part. Firstly, let us see division by 10, 100, 1000, etc. So if we have, let us say this number 1, 2, 3, 4. What is 1, 2, 3, 4 divided by 10? We just add one decimal point after 4 here. What is 1, 2, 3, 4 divided by 100? Here decimal point. By 1000 we add here. By 1000 we add here. By 10,000 we add there. So whatever power of 10 we divide by the number by, we add decimal points from the right at that location. So if we have, let us say 1, 2 divided by 1, 0, 0, 0, 0. What would be this be? 0.0, 0, 1, 2. From here you start 4 times. 1, 2, 3, 4. Right? ठीक है. Division by 10, 100, 1000, 10,000, etc. Left जाना है decimal point को लेके. ठीक है. Any problem? Sham, any problem? No? Fine. Yes. See the same thing. He is asking if we have to prove in some equation LHS is equal to RHS. There is something on LHS, there is something on RHS. So question is, why can't we just divide on, multiply by 0 on both sides, and because 0 is equal to 0, we say that LHS is equal to RHS. Why can't we say? When can we say something like this? When we can cancel this 0. What is cancellation? Cancellation is dividing both sides by 0. Does this hold any meaning? No, it is not defined. That is why we cannot say this. Because to say this, we have to divide by this particular number. So whenever we are saying, let us say we got this relation k into LHS is equal to k into RHS. And so we cancel k and say that LHS is equal to RHS. When can we do that?
We can only do that when this k is not 0, because otherwise when cancelling we are doing nothing but we are dividing both sides by 0 and cancelling like this. We can divide by 0 only if number is we can divide by number only if the number is non-zero, not when it is 0. Otherwise we get lot of contradictions like we saw earlier. So we can even prove like 2 is equal to 3. You are going to say that 2 into 0 is equal to 3 into 0. So 0 equal to 0. क्योंकि ये true है, ये भी true है. You get some results like this, which is contradiction, is irrational. Entire system collapses. That is why we don't divide by 0. And you can show this only when numbers are divided by 0. So whenever you see any such tricks that go around in market, YouTube videos proving that 1 is equal to 5, 2 is equal to 3, etc. यही किया होगा कि कहीं ना कहीं 0 से डिवाइड किया होगा, जो कि अलाउड नहीं है. हाँ, इट इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड. ठीक है, 10, 100, 1000 से डिवाइड करना आ जाएगा. You can divide any number by 10, 100, 1000. If you have like 0.12, if I ask you to divide it by 10, क्या करोगे? When we want to divide by 10, एक decimal point यहाँ चला जाएगा बस. Clear? Earlier when we wanted to multiply by 10, we used to go on the right. If we want to divide by 10 की powers, you go to the left. यही difference है. ठीक है. And rules for positive and negative numbers, जो हमने जैसे पढ़ा था ना कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या रूल्स होंगे? सेम रूल्स. व्हाई? बिकॉज डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स ऑपरेशन. इफ आई हैव टू डिवाइड a by b, we are doing it nothing but a into 1 by b. So rules for division would be same for multiplication. Okay, division is nothing but of reverse operation of division. So positive divided by positive will give you positive. Positive number divided by positive number is a positive number. Positive by negative or negative by positive क्या होगा? Negative. And negative by negative होगा positive. Same rules that we had in multiplication. Exactly same. ठीक है, कोई इशू? ओके, गुड. चले देखे डेसिमल पॉइंट्स का डिवीजन. Should we just go ahead and see how to divide two decimal numbers? Now, what is the answer for 620 divided by 2? 31. No doubt. What is 6.2 divided by 2? Huh? 3.1. What is 6.2 divided by 0.2? आंसर बताओ ना. 31. Then what is 0.62 divided by 2? 0.31. I'll come to the working rule. We are just trying to get acclimated. 0.62 divided by 0.2. ये क्या होगा?
What is 62 divided by 0.2? What is 0.62 divided by 0.0002? समझने से ज्यादा लिखने में ध्यान रहता है तुम लोग का। जैसे कि मैं भागने वाला हूँ इधर से मिटा के। हाँ, एकदम अपोजिट आ रहा है तुम दोनों के आंसर में 10⁶ के फैक्टर का डिफरेंस। फाइन। With this, let me tell you how do you work around with it. Using one method is working rule, another method is getting rid of decimal points. You can do either of the two. Fine. Let us first discuss getting rid of the decimal point. हम लोग क्या करते हैं? We multiply numerator and denominator by that power of 10 to get rid of decimal places in numerator as well as denominator. तो हमें डेसिमल पॉइंट पसंद ही नहीं है. विल जस्ट गेट रिड ऑफ इट. हाउ? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें. बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन और डिवीजन डज नॉट चेंज. if there is a by b and I am multiplying it by 1000 by 1000, उससे फर्क थोड़ी कोई पड़ेगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट 1. इज नथिंग बट 1. 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So here there is no question of decimal. है ही नहीं. 62 divided by 2 is directly 31. Here we have one decimal in the numerator. But look at it, if we multiply numerator by 10, ये इधर चला जाएगा and there is no decimal now. So what is this? This would be 62 divided by 20. Because I have multiplied by 10 in the numerator, I have to do it in the denominator. वरना तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. वैल्यू चेंज नहीं करनी है, वैल्यू सेम रखनी है, बस डेसिमल नहीं चाहिए. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? शाम नहीं समझा? व्हाट वी आर सेइंग इज, हमें ये डेसिमल वाला चक्कर ही नहीं रखना है. दिस मेथड नंबर 1, जहां पे वी आर ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. वी डोंट वांट टू वर्क विद डेसिमल पॉइंट्स. So how do you get rid of this decimal point? You multiply by 10, 100, etc. so that ये right rate चला जाके finally disappear हो जाए. So here there is only one digit after decimal point. So if you multiply by 10, this decimal point will be here and it is gone now. So we multiply numerator by 10. What do we have? 62. But we have, because we have multiplied numerator by 10, we have to also multiply denominator by 10. Otherwise value of the division would be different, value of the fraction will change. We don't want that. So we multiply 2 by 10 which is 20. ठीक है? अब ये डिवीजन कर सकते हो. This is 31 divided by 10 which is 3.1. ये आता है डिवीजन. अभी हमें we just put one decimal point here. Same thing here. Here there is 1 and here also there is 1 point after decimal. How do you get rid of this decimal point? You multiply numerator by 10 and denominator also by 10. So you get 62 by 2. Numerator is also multiplied by 10. Denominator also multiplied by 10. 62 by 2. Answer is 31. Let us come here. Here in the numerator you have 2 points after decimal, 2 numbers after decimal. Here you have none. So you have to multiply numerator by 100 to get rid of the decimal, right? So you multiply it by 100, you get 62. So you have to multiply by denominator also by 100, because numerator में किया तो denominator भी करना पड़ेगा. So what is 2 into 100? 200. सही है ना? 2 into 100 is 200. 31 divided by 100 which is 0.31.
कोई इशू? पक्का? आपका नाम भूल गया मैं। सौम्या, स्वप्निल, ओके। इन दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, numerator has 2 digits after decimal point and denominator has only 1. So numerator requires you to multiply by 100 and numerator by 10, sorry denominator by 10. तो बड़े वाले से करेंगे, जो भी इन दोनों से बड़ा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, व्हाट डू वी हैव? 62. बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर बाय 100, डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा. तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 20. सेम एज दिस 3.1. यहाँ पे भी सेम आया था. तो आंसर इज 3.1. ठीक है. In this question, you have 1 digit after decimal in denominator. Numerator का कोई issue नहीं है. So we multiply by 10. So here we get 620. Here we get 2. This is 310. Here we need 10 raised to 4. You have to multiply by 10,000. And here by 100. So we multiply by 10,000. Bigger of the two. So you get 6200 divided by 2, which is 3100. This is method number 1, which is we try to get rid of the decimal point and solve thereafter. This is method number 1. आपको जो भी comfortable लगे आप वो use कर सकते हो, कोई issue नहीं है. This is method number 1 where we try to get rid of the decimal point. इसमें कोई डाउट? टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाएगा. That is the second thing. That is the working rule which we do. What we do in the working rule is we forget that there is a decimal point. भूल जाते हैं, कोई परवाह नहीं हमें decimal point. And we divide it as if there is no decimal point. तो जैसे 6.2 divided by 2 हमने भूल गया कि there is a decimal point. We just divide by 62 by 2. We get 31. And now we try to put decimal point at a place which is difference between points in digits in numerator after decimal point minus digits in denominator in the after decimal point. तो यहाँ पे how many digits are there after decimal point? 1. यहाँ पे 0. 1 minus 0 is 1. So we put decimal point after 1. Here you have 1 in the numerator, 1 in the denominator. 1 minus 1, 0. So there is no need of decimal point here. Directly 31. Here you have 2 in the numerator, 0 in the denominator. 2 minus 0 is 2. So there is decimal point after 2. 2 in the numerator, 1 in the denominator. 2 minus 1, 1. So decimal after 1. No 0 in the numerator, 1 in the denominator. 0 minus 1 is minus 1. Minus 1 matlab you have to go now right. You have to add 0. Instead of putting a point, you have to add 0. Here we have 2 in the numerator, 4 in the denominator. 4 minus 2 is minus 2. Sorry, 2 minus 4 is minus 2. So you have to add 2 zeros. 31 तो initial value है ही, but now you have to add 2 zeros. Here, let us take one more example. If we have 0.062 divided by 200, here you have 3 points. Here you have 0 points. So answer is 31 is there, and 3 minus 0 is 3. 3 minus 0 is 3. So decimal after 3 points. 1, 2, 3. 3. 0.031. ओके, क्या ये सही है? नहीं है ना? ये हमने 2 से डिवाइड किया है ना, 200 से नहीं किया. तो दिस इज 2 into 100. So this is 31
0.062 divided by 2 into 1 by 100. What is 0.062 divided by 2? अभी हमने निकाला कि 310, and now you divide this by 100. So you have to go to the left by 2 more points, which is 0.00031. ठीक है, नहीं समझा? मेथड कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? वो कर लो, वो करके देख लो. लेट अस गेट रिड ऑफ द डेसिमल पॉइंट हियर. क्या है ये? मल्टीप्लाई बाय 1000. So this would be 62 by 200 into 1000 is 10. 3 0 ऐड हो जाएंगे. Now you can perform this. This is nothing but 62 by 2 into 1 by 1 followed by 5 zeros. This is nothing but 31 divided by 1 lakh. So 5 times you have to shift. अभी कितना हुआ? 4 हुआ. एक और बार करना पड़ेगा. So here there is a point. This is the answer. जो भी अच्छा लग रहा है, do that, no issue. ठीक है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इश्यू? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? In first we try to get rid of the decimal point. In second there is a working rule. Working rule is whatever number of digits are there in the numerator after decimal minus whatever number of digits in the denominator, and we take a difference and we add decimal point after that many points, after that many digits. ठीक है, बताओ कौन सा ठीक लग रहा है? हाँ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट. हाँ, पहला वाला बेटर है. दोनों नहीं. हाँ, फर्स्ट. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है. I'll give you practice questions. Do it. Perform the divisions on your own. आदत होने की बात है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि मैं तुम्हें आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बता रहा हूं कि जो तुम कर ही नहीं पाओगे. जहां पे बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर टू गेट रिड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, वो करना. जो भी अच्छा लग रहा है वो यूज करके सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Solve this question on your own. Yes, 1 minute. I'll give you. लिख लिए questions. Fine. Now Sunil wants me to repeat method number 2. In method number 2 what we did was we just counted
decimal points in the numerator, digits after decimal points in the numerator as well as denominator. So for example here, we perform the division forgetting that there is a decimal point. So we have 62 in the numerator, 2 in the denominator. 62 divided by 2 is 31. Okay, and now we are trying to worry about decimal point. In numerator we have 2 digits after decimal point, and in denominator you have 1 digit after decimal point. So what we do is we take 2, we subtract 1. 2 minus 1, 1. So we give decimal point after 1 digit. Here we first forget that there is a decimal point, and 62 by 2 is 31. And in the numerator now we have 0 digits after decimal point, कुछ है ही नहीं, decimal point ही नहीं है. And in the second we have 1. So 0 minus 1 is minus 1. So you add 1 0. Okay. Here in this question, we first forget that there is a decimal point. So what we have? 62 divided by 200. We forget that there is a decimal point. So we have 62 divided by 200, which is 0.31. 62 divided by 200 is 0.31. No? 62 by 200 is equal to 31 by 100, which is 0.31. 100 से divide कर सकते हो. And now we have numerator 3 digits after decimal point. In the denominator there are none. So 3 minus 0 is 3. So you have to go left by 3. So how do we go? 0.00031. Decimal point was here earlier. You have to go left by 3. Okay. That is the working rule. ठीक है सुनील? Firstly, you divide as if there is no decimal point, and then put the decimal point as per difference between digits in the numerator after decimal points minus digits in the denominator after decimal point. कोई भी मेथड जो भी अच्छा लग रहा है, एक से सारे वो क्वेश्चंस कर लेना, and you will be confident that you can do it. ठीक है? Do it yourself. Ignore मत करना. Now we come to PYQs जो भी बचे हुए इस सेक्शन से. फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे. लेट अस ट्राई थर्ड क्वेश्चन. आपने कर लिया था? जिन्होंने भी वो कर लिया है क्वेश्चन, मूव अहेड. जो किया नहीं है वो करो. सारे हो गए? अच्छा. हाँ, एक और बात. अच्छा, what we have given is we have ABC plus DEF and answer given is 1111. और क्या बोला गया है? We are also given that these are non-zero digits and these are distinct digits, and what we want to find out is this quantity A plus B plus C plus D plus E plus F. We want to find value of this. So we are doing nothing but our regular addition. Regular addition mein what we start with? We start with unit place. We add unit places and you get number here. So C plus F we are getting 1. That's unit place. It can come from either 1 or 11. It cannot come from 21 because 2 digits का addition 21 कभी होता ही नहीं है. 9 plus 9 भी करो तो भी 18 तक ही जाता है. तो या तो this would be either from 1 or 11, not more than that. And further it cannot be 1. Why? Because both of these are non-zero. So even if they are the smallest digits, 1 plus 1 होगा तो भी तो 2 जाएगा वो. 1 कभी नहीं होगा. For 1 you need one of them as 0 and one of them as 1. Then only it can be 1. But none of them is 0 because that is given. Both are non-zero.
I think yes. Your answer is correct. So what do we have? This C plus F should be 11, right? That is the only conclusion that is possible. C plus F is 11. One is not possible, so 11 ही होना चाहिए. So 11 का 1 आ गया and 1 carry forward हो गया. Again same logic. B plus E plus 1 is giving us 1. Now we add 10. Huh? Any number. B plus E plus 1 is giving us 1 here at the tens place. So this should come from 1 or 11. 1 से आ नहीं सकता because both of them are non-zero. Then it should be 11. So 1 plus B plus E is equal to 11. So what is B plus E? 1. You can take on that side. 11 minus 1 is 10. Then only we have 10 plus 1 as 11. So B plus E is 10. Again you have B plus E plus 1 as 1, 11 and carry forward 1. Same logic. A plus D plus 1, you now have 11. So A plus D is 10. You add left hand sides, you add right hand sides. When you add left hand sides, you get this quantity. A plus B plus C plus D plus E plus F. And on the right hand side, you get 31. Okay. Those who have got the answer can move to the next question. आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 37DD वाले का. हाँ, कैनॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है. अच्छा, क्यों? सॉल्व नहीं हो रहा तो कैनॉट बी डिटरमाइंड. कुछ हो रहा है चलवा? आर यू एबल टू डू एनीथिंग? सारे हो गए? ओके. दिस क्वेश्चन, इसका कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा. नहीं हो रहा. We'll do both the methods. One is more formal way of doing things, which is something I should teach in class. One is examination hall में क्या करें. कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं क्लिक हो रहा. If we are not able to connect the dots, if you are not able to remember or any intuition नहीं आ रहा कोई formal method का, then what should we do? That is the method number 2. Firstly, let us see the formal method. We have something like this: ABC into D is equal to 37DD. And whenever we have such unknown quantities, we tend to look for place values. So here what we do is we write this as 3700 plus 10D plus D. Any problem? इसमें कोई प्रॉब्लम है? Which is equal to 3700 plus 11D. Right? Now on the left hand side we have ABC into D. On the right hand side we have 3700 plus D. We divide both the sides by D. So what do we get? ABC is equal to 3700 divided by D plus 11. Okay.
अब इससे क्या हो रहा है, what is happening is we just learned that subtraction of two integers has to be an integer. So this ABC is an integer. If you minus 11, if you take 11 on this side, ABC minus 11 has to be an integer. ABC minus 11 has to be an integer. So this number has to be an integer. 37DD divided by D has to be integer. And D is a digit, single digit hai D. Right? So when is 3700 divided by a single digit an integer? When D is a factor of 3700. So we want to find out single digit factors of 3700, which is nothing but 1 is one factor of 3700. Yes, 1 is factor of all the numbers. Is 2 factor of 3700? Basically is 3700 divisible by 2. Yes. Is it divisible by 3? What is divisibility test of 3? It is sum of the digits of the number has to be divisible by 3 if the number is divisible, for the number to be divisible by 3. What is sum of the digits? 7 plus 3, 10. Is 10 divisible by 3? No. So this number is not divisible by 3. Is it divisible by 4? Yes, because there is 0, 0 at the end. And we'll study about this divisibility test. Don't worry if you don't know. It is divisible by 4. Is it divisible by 5? Yes, क्योंकि 10 से divisible है, 0 से end में, तो 5 से तो है ही. Is it divisible by 6? No, 3 से ही नहीं है, 6 से कैसे होगा? Is it divisible by 7? You can check. It is not. Is it divisible by 8? Again no. Is it divisible by 9? नहीं, क्योंकि 3 से ही नहीं है. So D can only be 1, 2, 3, 1, 2, 4 and 5. Only these options for D are there. Now we are having only these options for D. But ABC is a 3-digit number. ABC is a 3-digit number. And we are multiplying this ABC by a single digit and getting answers 3700 something. Right? So can this D be 1? 3-digit number into 1, वही सेम डिजिट होगा ना, सेम एबीसी होगा, तो 3700 तो नहीं है वो, तो D cannot be 1. Can D be 2? Any 3-digit number into 2 has to be less than 2000, because you can take biggest 3-digit number 999, that is the biggest 3-digit number. Even if you multiply that by 2, you will get 1900 something. So 3700 is not there, इतना बड़ा है ही नहीं वो. So D cannot be 2. Can D be 3? You take biggest 3-digit number 999, you multiply it by 3, you will get something like 2700 or 2800 something. Again you are not getting 3700. So if you have D as 1, 2 or 3, you get a number less than 1000, less than 2000 or less than 3000. Because even if D is 3, 3-digit number into 3 has to be less than 3000, क्योंकि 1000 भी ले लो जो कि बड़ा है सारे 3-digit नंबर से, and you multiply that by 3, it is 3000. तो 3-digit नंबर से 3 का मल्टीप्लिकेशन छोटा ही होगा 3000. ये बात समझ रहे हो? पक्का? तो D cannot be 1, 2 और 3. तो क्या बचता है? 4 and 5. डाल के देख लेते हैं. हाँ, we can just put D as 4, you get 3744 divided by 4 is equal to ABC. You have ABC into D is equal to 37DD. So ABC is equal to 37DD divided by D. Now you put D as 4, you get 3744 by 4. You put D as 5, you get 3755 by 5. What is the answer here? You get 936.
and here you get 751. Two possible answers. But if you read question carefully, they have said that these A, B, C, D are distinct. They have said that A, B, C, D are distinct, and here D is equal to 5 and B is also 5. So this is not allowed. So this is the correct answer. You get 9 plus 6, 15 plus 3, 18 is the answer. Yes, 3700 is not divisible by 3, right? So this is a more formal way of doing things. But एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है वो देखते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, ये शायद ना भी क्लिक हो. Now what we have is, we have this ABC into D is equal to 37DD. Fine. Firstly, we observe that D cannot be 1, 2, 3. वो तो हमें पता है. So we have to anyway start from 4. We have to anyway start from 4. What is happening is, this D, when we multiply it by some number, you should get D in the units place. We are trying to find out the possibilities. 1, 2, 3 तो रिजेक्ट कर दिया. क्यों कर दिया सब लोग समझ गए हो? Because we are getting 3700 here. So 1, 2, 3 तो आ ही नहीं सकता D. We are anyway starting from 4. Now can 4 come as D? That is our question. So if you put 4 here, तो 4 के टेबल में एंड में 4 कहीं आता है? That is the question. Does anywhere in the table of 4 do we get 4? Yes, we get 4 1s are 4 and 4 6 are 4. So 4 is definitely possible. Same question we asked for 5. Is 5 possible here? So 4 is possible. Is 5 possible? Yes. So we are considering it. 5 into something. 5 आता है कभी? Yes, 5 into 1, 5 into 3, 5 into 7, everything is possible. Same question for 6. 6 into, but 6 तो आ ही नहीं सकता. Same question तो same तो आ ही नहीं सकता. So either you get 6 1, 6 1s are 6 or nothing. So 6 is possible only if C is 1. So you get 6 1s are 6 and then 6 into B is also 6. So then B can be only 1 or 6 also. But both are not possible because C ने 1 ले लिया and D ने 6 ले लिया. So that case is rejected. समझ रहे हो कैसे रिजेक्ट कर रहा हूं मैं केस? मैंने 4 5 को एक्सेप्ट कर लिया फॉर आज ऑफ नाउ, बट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट आर अदर पॉसिबिलिटीज. इज 6 पॉसिबल? 6 into something has to be 6 because D and D are, if I am considering this number as 6, D as 6. So D into C has to be 6 at the units place. 6 into something, एंड में 6 कब आता है? 6 के टेबल में 6 1s are 6 आता है एंड 6 6s are 6 आता है. 6 6s are 6 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज D has already taken value of 6, so C cannot be 6. So only possibilities are 6 1s are 6. So 6 1s are 6 आ गया, then 6 into B is again 6. So no value is remaining for B now. So B cannot be 1 and B cannot be 6. So 6 is not possible. Same story for 7. Where does in the table of 7? At the end we have 7. Only 7 1s are 7. So if you put 7 here, 7 here, 7 here, you get 7 1s are 7 and then again we want 7 1s are 7. But that is not possible because 1 is already taken. So we reject 7. Then we go to 8. 8 into something is 8. 8 1s would be rejected in the similar way, but there is one more possibility. 8 6s are 48. So we have 8 here, 8 here, 8 here. 8 6s are 48 and we have then 4 and something something. So 8 is another possibility that we may want to consider. So let us write down 8. And in the table of 9, where does 9 appear? Only once. 9 1s are 1s. That will be rejected.
like we rejected 6, 7. So only 3 cases we have to consider now. And then what we do, we simply put value of D in this formula. ABC into D is 37DD. So ABC is equal to 37DD divided by D. We put D as 4, we put D as 5, we put D as 6. 3 possibility, 8. Only 3 possibilities are there. So we get 3744 divided by 4, or 3755 divided by 5, or 3788 divided by 8. We check the values, and if the value follows the condition. This is what you should be doing in examination hall if you want to solve this question. Conceptually, only fact we have used is the multiplication, but application wise it may be little bit lengthy, because we have to consider 3 cases, we have to reject other cases, and if you don't want to even reject other cases, then you have to go by that thing, that you write 37DD as 3700 plus DD, and then claim that D has to divide 3700. So cases ही कम आएंगे आते टाइम में, बाकी को देखना ही नहीं. Because D has to divide 3700, so D can only be 4, 5 or 1, 2. 1, 2 are rejected as always. 4, 5 we check. Here we have checked 4 and 5. We accept 4 because number is 936. Here we have 751. We reject because D has already taken value of 5, so B cannot be 5, and this comes out as a fraction. But fraction we don't want fraction, we want a integer. That is why we reject that case. So we have a unique answer, and they have asked A plus B plus C, which is 9 plus 3, 12 plus 6, which is 18. थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. Okay, we have a 3-digit number and we are multiplying it by a 1-digit number. Okay, any 3-digit number into 1 क्या होगा, वही नंबर होगा. वो तो है ही नहीं, 37DD आंसर आना चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन का. That is why we reject 1. Why we reject 2? 3-digit number into 2 मैक्सिमम क्या हो सकता है, 999 into 2 हो सकता है, बट जो 1000 into 2 से छोटा होगा. 999 into 2 भी 1000 into 2 से छोटा होगा, मतलब 2000 से छोटा होगा, बट ये 3000 से बड़ा है. We reject 2. Similarly, for 3 we reject because 1000 into 3 से छोटा होगा वो, which is 3000, but ये 3700 is a bigger number than 3000. That's why we reject 1, 2, 3 at the initial stage, and then we either put numbers and check which are possibilities, or we directly go by place values and decide them. You can do one more thing, that दिमाग चलाओ ही मत, दिमाग चलाओ ही मत, सीधा डाल के देख लो क्या है ये. दिस इज यही है ना, ABC into D is 37DD. This is what we have. How many digits are there? 9 digits है, नॉन जीरो कंसिडर करने हैं. तो ABC ये तो लिख ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिवाइडेड बाय D, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आ सकते हो, एक ही स्टेप आ गया है. नाउ जस्ट पुट वैल्यूज ऑफ D. D को 1 डाल दो, क्या आएगा, 3711 by 1. D को 2 डाल दो, 3722 by 2, 3733 by 3, up to 3799 by 9. यही होगा. कुछ जगह पे फ्रैक्शंस आएगा, वो रिजेक्ट कर देना. कुछ जगह पे 4 डिजिट नंबर आएगा, वो रिजेक्ट कर देना. यू विल गेट योर आंसर. ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ 4 डिजिट नंबर. This will get rejected because this is again a 4-digit number. This will get rejected because this is fraction, and also this is fraction only, this is not divisible. This will get rejected because this is a fraction. Only case that will remain is 4 and 5. वहां पे ही बस 3-digit numbers आएंगे, and out of that you reject 5 because repetition is not allowed. This is the most brute force method. 9 लिखना है, 9 जगह 9 टाइम्स डिवीजन करना है,
एंड 2-3 मिनट जितना भी लगे, बट 2.5 मार्क ले सकते हो इसमें. दिस इज मोस्ट ब्रूट फोर्स मेथड दैट यू कैन अप्लाई. ये वाला अच्छा लगा सुनील को, बोलता ये वाला जबरदस्त है, इसमें मजा आ गया, ये कर सकते हैं. एग्जाम हॉल में वो सिचुएशन डिफरेंट होती है. सो व्हाट वी एक्चुअली हैव टू इम्प्लीमेंट मे नॉट बी आइडियल. आइडियल चाहिए नहीं, सॉल्व करना है किसी ना किसी तरीके से. So in classes we can discuss what should be the ideal or most optimum way to deal the question. But in examination hall there are other considerations, so you may not understand at the first instance what is most optimum. You may not have time to consider that, so you may just apply this brute force and be done with it. ठीक है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये वाला, सबको यही वाला मजा आया. सेकंड वाला भी ठीक था. हाँ, बट अगेन आपका जो भी कंफर्ट जोन है वहां पे स्टिक रहो. It is already 10:30. Next question is way too long. We'll deal with that later. पहले आगे वाले क्वेश्चन 2 कर लेते हैं. एक तो जो आपको डाउट था एंड एक उससे पहले. We have done this question in class, our first class as well. What they are saying is question 5th देख लो, मतलब ऊपर से 5th. Each digit of a 9-digit number is 1. So we have 111, 111, 111, and this number is multiplied by itself. So this is fancy way of saying ये चीज के बारे में बात करनी है. And question is what is the sum of resulting number? So we square this, we get some answer, and what is the sum of the digits of that particular number? So whenever you get such outrageous questions कि जो तुम कोई भी sane examiner will actually want you to calculate this in examination hall. ऐसा थोड़ी बोलेगा कि ये मल्टीप्लाई करके देख ले. That would be stupid. So in every such question where such outrageous questions are there, there will be some pattern that would be formed. All we have to do is identify the pattern. How do we begin? We begin by taking 1 square. What is 1 square? 1. Then we get 11 square, which is 121. Just for the sake of confirming, we take one more number, 111 square. This you have to perform 111 into 111, which is, कैसे करोगे? Either you go by like zeros and all, or you directly, because एक तक ही जाना है. So 111 ones are 111. Carry 11. 111 ones are 111 plus 11 is 122. Carry 12. 111 ones are 111 plus 12. 1, 2, 3. So this is 1, 2, 3, 2, 1. अब पैटर्न दिख रहा है. Is pattern visible here clearly? What would be the answer here? Here there are 9 digits. यहाँ पे 3 थे तो 3 तक गए, वापस आए. Here we go till 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is the answer. Question is what is the sum of the digits? Just add करना है. And if you remember the formula that I talked about earlier, this is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to 8. So formula for that is 1 plus 2 plus up to n is equal to n into n plus 1 is equal by 2. This is 8 into 8 plus 1 by 2, और ऐसा 2 बार हो रहा है, plus 9. This is 72 plus 9 is equal to 81. हाँ. हम्म. 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 9 स्क्वायर डायरेक्टली कैसे कर रहे हो? हाँ.
No, we have to find the square and add these digits. How can you ensure that इसका ही मतलब that is what the sum you are getting? क्यों मतलब 9 into 9 क्यों? हाँ हाँ ओके हाँ हाँ ऐसा थोड़ी होता है मतलब दिस इज नॉट द दिस यू आर जस्ट बाद में तुम लगा रही हो उसको ऐसे दिस नो दिस डज नॉट मेक एनी मैथमेटिकल सेंस ऐसा थोड़ी होता है कि वी हैव एबीसीडी सम नंबर एबीसीडी उसका स्क्वायर सम ऑफ द डिजिट ये थोड़ी होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर नो बट यू आर अप्लाइंग दिस ना यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस व्हाई मतलब एटलीस्ट यू जस्टिफाई इधर यू जस्टिफाई और देन यू आर गेसिंग एग्जामिनेशन हॉल में गेस कर सकते हो क्या तुम ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में पैटर्न फाइंड कर सकते हो विच इज सेफेस्ट थिंग so is this okay this was doable again whenever we have some outlandish questions we try to find out the pattern एक और क्वेश्चन करना है बंद करना है आपकी क्लास है ओके विल डू इन द नेक्स्ट क्लास देन आप रुको वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन फिर आप जाओ नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे डिस्कस कोई प्रॉब्लम नहीं कैसा लगा आपको ठीक लगा आज का फास्ट था स्लो था सही था पेस समझ रहा है चीजें पॉजिटिव सेम रूल एज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन में निगेटिव इंटू निगेटिव क्या था सेम रूल ठीक है बेटर लग रहा है थोड़ा सा आपको मैथ से डर लग रहा था बेसिक अभी भी लग रहा है बट अभी थोड़ा सा बेटर है ठीक है हाँ यार क्लासरूम अवेलेबल नहीं है ना या आई अंडरस्टैंड क्लासरूम अवेलेबल होता तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मैं खुद संडे को थोड़ी सुबह उठना चाहता हूँ क्लासरूम अवेलेबल नहीं है हाँ हाँ ये भी बात है अदरवाइज तो संडे को सोते रहोगे 11 बजे तक इससे अच्छा है कि चलो क्लास के बहाने जबरदस्ती उठ गए हाँ 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 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस साल फिर से इफ यू नो 15 वाला क्वेश्चन 23 में फिर से रिपीट हुआ है इन डिफरेंट फॉर्मेट विच वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास क्वेश्चन वो था याद है एक्स वाई जेड लास्ट क्वेश्चन क्लास में जो डिस्कस किया था हाँ हाँ आप नहीं थे बट इस साल वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ऐसे कुछ पीवाईक्यूज अगर याद रखोगे ना तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिवली हेल्प कर जाते हैं यस यहाँ पे तो आपको वैल्यू पुट करके देखना था हाँ एबीसी की वैल्यू ले लो और डीईडी का ट्राई कर लो देर इज मोर फॉर्मल वे टू डू दिस देर इज मोर फॉर्मल वे टू डू दिस विच वी डिड इन लास्ट क्लास आपका हो गया तो आप जा सकते हो मैंने रोक के नहीं रखा है किसी को यहीं पे है अच्छा फिर रुको तो वी हैव एबीसी इज इक्वल टू एबीसी 0 0 0 0 0 प्लस एबीसी ठीक है इज इक्वल टू एबीसी इंटू 1000 प्लस एबीसी इज इक्वल टू एबीसी कॉमन ले रहे हैं अभी एबीसी इंटू 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू एबीसी इंटू 1001 ये यस यस थैंक यू अश्विनी
please look into worksheet. Yes, I'll get the worksheet uploaded today. Don't worry about it. And yes, our aim is to you should feel as confident in examination hall as you are feeling in classrooms when I'm explaining. That will happen when you go through all the classes and solve enough mock test, and in each mock test you are getting more than 90-100 marks comfortably.